Hello and welcome to my channel by English for You. In the series of mastering advanced grammar through newspapers, today I am going to do the postmortem of one sentence taken from the Hindu newspaper. See, by the end of this lesson, you are going to learn all types of sentences and adverbials in detail. So without further ado, let's get started. See, I have taken this sentence from the Hindu newspaper. Okay, and this sentence is a simple sentence. So before I start grammar used in this particular sentence, I would like to translate this sentence into the Hindi language. See the translation. See the first line. The monsoon season. The first line is the monsoon season saw a stormy start on Monday. सोमवार को मानसून सत्र की तूफानी शुरुआत देखने को मिली. मीन्स बहुत आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट बहस बहुत ज्यादा हुआ, तो उसके बारे में बता रहा था. मानसून सेशन saw a stormy start on Monday. सोमवार को मानसून सत्र की तूफानी शुरुआत देखने को मिली. See the next line. See here. Suppose we put a comma here, then we are going to get a simple sentence itself. Simple sentence. See, अगर यहाँ पे comma लगा दें तो ये sentence complete है. But still we are having, see how many phrases, extra 4 phrases. So what are those? We will learn about all this grammatical topic in detail. See, the first line is सोमवार को मानसून सत्र की तूफानी शुरुआत देखने को मिली. कैसे? ऐसे ऐसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्री को पेश करने में वो समर्थ रहे. तो वो क्या बता रहा है? माइनर, इस तरह से. एंड देन as is customary after a reshuffle. As is means as it is. Here it is understood. जैसा कि यह फिर बदल के बाद प्रथागत यानी हमेशा से होता आ रहा है. जो भी न्यू मिनिस्टर बनता है उसे प्राइम मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में. कब? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट, पहले दिन पार्लियामेंट के. एक्चुअली में पार्लियामेंट सेशन होता है 3, विंटर, मानसून एंड बजट. तो उसी सेशन में आपको फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस करना होता है पीएम के थ्रू. एंड द फाइनल phrase is talking about the reason, due to. सो ईंधन की कीमतों में वृद्धि और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के विरोध के कारण. So it is all about the Hindi translation of this particular sentence. Now try to understand grammar used in this particular sentence. See first, this one is the elements of a clause. So we have 5 elements. These are the elements. Okay. And among these, adverbial is this one. Adverbial is completely different because it can be used at many places. See, where can be used this adverbial? At the beginning of a clause, see here, before verb here, and after complement here. And moreover, we can have any number of adverbials. So in this particular sentence, we are having 5 adverbials. See, first one is here, second one is here, and the third one is here, yellow color वाला ये पूरा, as is customary after reshuffle. And the fourth one is on the first day of parliament, and the fifth one is due to the opposition's protest against the fuel price hike and the farm laws. So we are having 5 adverbials in this particular sentence. So we can have any number of adverbials, not necessarily at the end of sentence or clause. We can have even at the beginning of clause. Okay, so it is all about the placement of an adverbial in a clause. Okay, so now try to understand this one. See, this sentence is a simple sentence.
What kind of sentence is this? This one is a simple sentence. So why do we call it a simple sentence? So what is the reason? So let us start to understand its definition first. See, we use the term simple sentence for an independent clause that does not have another clause functioning as one of its elements. What does it mean? इसका मतलब है कि आपके पास एक मेन क्लॉज है, ठीक है, उस मेन क्लॉज के अंदर दूसरा क्लॉज नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो उस क्लॉज का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इन सभी में से कोई नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसमें देखते, इसमें तो दूसरा क्लॉज है ही नहीं, जब नहीं है तो सिंपली इससे simple sentence. Okay, now have a look at 4 examples to understand it further. See the first one. Here you is the subject, you, and then can borrow. Can borrow is a verb phrase, subject and verb, and then object, and then object is my laptop is a noun phrase, and then we are having an adverbial clause. See here, if you need it, if you need it, if you need it, इसमें क्या है, subject you है और predicate need it. Okay, so definitely it is a clause, and we are using if is a subordinate clause, so definitely it's an adverbial clause. Okay, adverb of condition. See, now we are having subject, verb, object and then adverbial. इसमें कंप्लीमेंट नहीं है। ये चार में चारों एलिमेंट जो है वो किसका एलिमेंट्स है? देखो किसका एलिमेंट है? क्लॉज का एलिमेंट है। और डेफिनेशन ये बोलता है कि आप क्लॉज के अंदर दूसरा क्लॉज है तो वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट ये तो एलिमेंट है। यहाँ पर ये एडवर्बियल क्या है? एलिमेंट है। किसका? क्लॉज का। और वो एलिमेंट जो है खुद में एक क्लॉज है, तो डेफिनेटली दिस वन इज अ नॉट सिंपल सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस वन इज अ complex sentence. Okay, this one is a complex sentence, and the definition of complex sentence is very simple. Okay, we need to have at least one dependent clause, and we are having here one dependent clause. If you need it is a dependent clause. An independent clause कौन है? You can borrow my laptop. Independent clause भी है, dependent भी है, तो ये simple, ये complex sentence हो गया। Now see the second example. See the second example. You subject, again verb and then object. The laptop that belongs to my father. See here, यहाँ भी एक clause है, ये that belongs to my father. Okay, that is a subject and then predicate. So here we are having a clause again, second clause, but problem इसमें क्या है, मेन थिंग क्या है कि ये क्लॉज जो है सेकंड क्लॉज, ये इंडिपेंडेंटली कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? दिस वन इज एन एडजेक्टिव क्लॉज modifying the previous noun in a noun phrase. The preceding noun antecedent, लैपटॉप के बारे में ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है? पूरा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा द लैपटॉप दैट बिलोंग्स टू माई फादर is the direct object of borrow. So this one is a simple sentence. इस क्लॉज में दूसरा क्लॉज भी है, वो क्लॉज एलिमेंट नहीं है क्लॉज का, वो क्या किसका एलिमेंट है? वो फ्रेज का एलिमेंट है। कौन सा फ्रेज का? नाउन फ्रेज का, जो कि वो ऑब्जेक्ट है। हेड क्या है? द हेड इज लैपटॉप, द हेड इज लैपटॉप in this particular noun phrase, and determiner is the, and post, this one is the laptop, this one is post modifier that belongs to my father, essential post modifier that belongs to my father. So this sentence is a simple sentence. Okay, now move to the third example. See, we are having two simple sentences in this sentence, two simple
two simple sentences here. One here and the second one is here. Two simple sentences. How? See the subject everyone, was, verb, and then complement busy. So we're having three elements of a clause: subject, verb, and complement. So definitely this one is a simple sentence. Again, next one. I subject, verb, went, and then adverbial to the movie and alone. Two adverbials are here. So again we are having simple sentence. But the main thing is that these two simple sentences are connected with a coordinate conjunction. So that is why this sentence is called a compound sentence. So what is the definition of compound sentence? Very simple. अगर आपके पास दो और दो से ज़्यादा अगर सिंपल सेंटेंसेस हो और उसको आप कनेक्ट करते हो किसी कंजंक्शन से एक्सेप्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन समटाइम विद सेमीकोलन एज वेल, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस. नाउ मूव टू द डी. नेक्स्ट एग्जांपल. सी नेक्स्ट एग्जांपल. आई हैव बीन डूइंग जिम्नास्टिक्स सिंस आई वाज 14. तो सिंपली ये तो आपका हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एक एडवर्बियल क्लॉज है आपके पास. सिंस आई वाज 14. देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है. हैव बीन डूइंग क्या हो गया आपका? वर्ब फ्रेज. हैव बीन डूइंग वर्ब फ्रेज. व्हाट? जिम्नास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट के बाद क्या आपका? एडवर्बियल है, और एडवर्बियल एक क्लॉज है. मैंने क्या क्या कहा है? आपका एलिमेंट जो है वो क्लॉज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर क्लॉज क्या एलिमेंट है? एडवर्बियल है. सिंस आई वाज 14. सिंस आई वाज 14. तो ये क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. अब देखो दूसरा भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें भी क्या है? इसमें देखो आई सब्जेक्ट है. got into phrasal verb into what? Cricket object. Once again here we are having an adverbial. Okay, when I was a freshman in college. So two complex sentences are connected using a coordinate conjunction. That is why this one is called compound complex sentence. क्योंकि इसमें कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. कंपाउंड कैसे है? देखो इसमें दो जो है, आई हैव बीन डूइंग जिम्नास्टिक एंड आई गॉट इनटू क्रिकेट, इसमें दो क्या है? सिंपल सेंटेंस है. और दो सिंस आई वाज 14 एंड व्हेन आई वाज अ फ्रेशमैन इन कॉलेज, दो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेस भी है. मिनिमम एक होना चाहिए, यहाँ पर दो है. तो ये क्या हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सी अगर सिंपल सेंटेंस है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सिंपल होगा. So let's have a look at one example to understand it. See this one. This one is a big sentence, but still this one is a simple sentence. How? See, try to understand this one. See, on the recommendation of the committee, this one is an introductory phrase. On the recommendation of the committee is an introductory phrase, prepositional. And after this, we are having the subject of this sentence, the temporary chairman who had previous experience of the medical issues concerned. Subject हो गया. And then we are having a verb, finite verb. And after finite verb, we are having object. And this object is having multiple clauses. See, one clause that no further experiments on living animals should be conducted in circumstance. और उसके बाद फिर एक और है that. Okay. So object is having two clauses, but the main thing is that both of them are not independent element of a clause. Both of them are adjectival, I mean adjective clauses, talking about the previous noun. See the here, this one, that no further experiment on living animals should be conducted in circumstances. तो ये किसके बारे में बता रहा है? डिसीजन के बारे में. The decision. So
Adjective phrase clauses talk about the previous or preceding nouns. तो here it is talking about decision. अब दूसरे वाले में देखो ये that जो है that might lead, this talking about circumstances. So this one is not, these two are not the independent elements of this clause. Elements of you can say noun phrase है. देखो ये noun phrase है, एक complete noun phrase है, complete यहाँ से यहाँ तक. इसमें head क्या है? Decision. उसके बाद जितना भी है सब post modifier है. So this one is a simple sentence. Okay. Now try to understand about adverbial. See, the monsoon season here, ये subject हो गया the monsoon season, verb हो गया, and then object हो गया a stormy start, object, and first adverbial. उसके बाद second, third, fourth, fifth, 5 adverbials इसमें है. तो कैसे यूज हुआ ये इतना adverbials और क्यों यूज करते हैं? What is the reason? See, if we put here full stop, still we are able to get a core meaning of a sentence, of this sentence. इसका मतलब जितना भी एक्स्ट्रा है ये टोटल एक्स्ट्रा ही है, बट क्यों है, क्या रीजन है इसका? सी, अगर एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना है सेंटेंस के बारे में तो हम लोग यूज करते हैं वर्ब के बारे में, सेंटेंस के बारे में तो हम लोग यूज करते हैं एडवर्बियल्स, मल्टीपल एडवर्बियल्स. तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है. देखो कैसे. मानसून सेशन सॉ ए स्टॉर्मी स्टार्ट ऑन मंडे. सोमवार को मानसून सत्र की तूफानी शुरुआत देखने को मिली. कैसे ऐसा हुआ? तो ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रियों को पेश करने में असमर्थ रहे. सो दिस प्रीपोजिशनल फ्रेज is acting or functioning as an adverbial here and talking about what? So, it's the adverb of manner and giving more information about the finite verb used in the previous line, this one, so. So, कैसे देखने को मिला? कैसे? तो ऐसे. तो मैनर हो गया, विद से जो शुरू होता है वो मैनर होता है. मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी, मैनर ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर. उसके बाद फिर एडवर्बियल है यहाँ. सो अगेन जो एडवर्बियल यूज हुआ ये किसके लिए यूज हुआ है? देखो, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनेबल टू इंट्रोड्यूस हिज न्यू मिनिस्टर. तो इंट्रोड्यूस जो करते हैं न्यू मिनिस्टर को, उसके लिए ये बताया, उसके लिए ये एडवर्बियल यूज हुआ है. एज इज कस्टमरी आफ्टर रिशफल. रिशफल के बाद जैसा कि ये प्रथागत था, तो किसके बारे में बता रहा है? दिस वन इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मिनिस्टर. तो ये क्या है? ये खुद एक फ्रेज है जो इन्फिनेटिव फ्रेज है. तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन. दैट इज द रीजन आई हैव सेट इट ऑफ विद कॉमास. हियर सी द कॉमा एंड हियर कॉमा. Even if we removed this information, we wouldn't be losing anything else. I mean, we would not lose the core meaning of this phrase. Which phrase? With Prime Minister Narendra Modi unable to introduce his new minister. Okay. अब next one is on the first day of Parliament. तो ये किसके बारे में बता रहा है? फिर उसी के बारे में बता रहा है. To introduce his new minister, मतलब introduce जो करते हैं न्यू मिनिस्टर को, उसी के बारे में बता रहा है. फिर लास्ट में है, फिर एक फ्रेज है, आई मीन एडवर्बियल है, फिर वो भी बता रहा है किसके बारे में, उसी के बारे में बता रहा है. क्यों, क्या रीजन है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर हैविंग थ्री एडवर्बियल्स, दिस 3 एडवर्बियल्स, ओके, ओनली फॉर दिस infinitive phrase, and this particular adverbial is talking about giving more information about saw, and this one is also about saw. तो इसमें से 2 एडवर्बियल जो है वो यूज हुआ saw के लिए, saw फाइनाइट वर्ब के लिए, और 3 जो यूज हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब टू इंट्रोड्यूस के लिए, टू इंट्रोड्यूस हिज न्यू मिनिस्टर, नॉन फाइनाइट फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज के लिए. तो इस सिंपल सेंटेंस से हम लोग क्या सीखे? दैट वी कैन यूज मल्टीपल एडवर्बियल्स, ओके, एंड वी यूज एडवर्बियल्स टू गिव you can say information to describe the verb
describe the verb further, and you can say flowery sentences के लिए इसका यूज होता है. ये आपका कंपलसरी भी हो सकता है और नॉन एसेंशियल भी हो सकता है. इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो केसेस है. वी विल डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन in next video when I will be talking about adverbials. Okay, adverbial adjunct and everything about adverbials. So this is about this video only, and thank you for watching this video. Bye bye.